Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. So finally I am back with a very different art piece. But before coming to that, I would like to thank you all because मैंने जो last video डाली थी मैंने कभी नहीं imagine किया था guys कि आप लोग उसको इतना प्यार दोगे. मुझे नहीं पता था कि कोई और relate कर भी पाएगा उस video से. I feel blessed right now कि इतने सारे लोग connect कर पाए मुझसे. Also guys, I have seen आप में से काफी लोग अपने आप को शिवांगियंस बोलते हैं. I feel so blessed. But to be very frank, मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ. रादर आई वुड से मैं आप लोगों की फैन हूँ बिकॉज आप इतनी छोटी एज में इतने ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस बनाते हो. सो या थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड एंड आई फील ब्लेस्ड. सो या मूविंग ऑन, आई नो काफ़ी लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की रिक्वेस्ट करी हुई है एंड मैंने पास्ट में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बना भी रखी हैं एंड मैं बनाने वाली भी हूँ, बट नॉट दिस टाइम. इस बार मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के आर्ट वर्क को एक्सप्लोर करने का सोचा है एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट बिकॉज इट्स वे टू ईजी टू रिक्रिएट. ऑल्सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, you know the drill, right? Like, share, subscribe and comment down below if you like it. And don't forget to press the bell icon because अगर आप bell icon press नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मेरी न्यू वीडियो आई है. So yeah, moving on, this is the piece जिसमें मैं आर्ट पीस बनाने वाली हूँ. एंड पहले ही बता रही हूँ, आपको जिस भी साइज़ में बनाना है आप उसे बना सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि जिस साइज़ में मैंने बनाया आपको भी उसी में बनाना है. अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा बड़ी है तो आप और भी बड़ी बनाओ. प्लस अगर आपके पास प्लाईवुड नहीं है, आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, आप कैनवस बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो. वी ऑल आर फ्री टू डू एनीथिंग, टू यूज़ एनीथिंग. सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay guys, so this is the wooden plank and quickly I'm gonna start sketching on it. Here I'm using a white pencil. If you don't have it, it's okay. आप कोई भी white color pencil का भी use कर सकते हैं. Moving on, I have my Fevicol molded clay with me and मैं quickly इन दोनों components को mix करूँगी so that I can start with my 3D painting. So as you can see, मैंने जो बनाया है sketch, that is flower and leaves. So I am planning कि मैं सारे components को 3D ही बनाऊँगी. Stick करने के लिए clay को I am using Fevicol and yes, this is how I'm gonna do it. As you can see, I'm using my hands, brush and water to make the surface smooth. And trust me guys, the process is so good. मतलब आप खुद try करोगे आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा मज़ा आता है ये करते हुए. So yes, I'll just complete all of this because I am in love with the process. So yeah, once that is done, मैं similar way में अपनी leaves को भी complete करूँगी. And as you can see, I'm using my fingers, my nails and a tool as well. अगर आपके पास tool नहीं है कोई particular, it's fine, you can use a cutter as well. I'll complete the 3 leaves as well. And to be very frank, I am in love with the process. Do let me know in the comment section below आपको कैसा लगा ये process. So yeah, once that is done, now I'm gonna quickly complete the little detailings which are left. And process एकदम same है. मैं सबसे पहले Fevicol लगाऊंगी and उसके बाद clay को उसके ऊपर रख दूंगी and then I'll start shaping it. Now I'll keep this piece aside for an hour or so जिससे कि ये dry हो जाए. For background I'm using white, turquoise and yellow color. Yellow की quantity थोड़ी कम रख रही हूँ मैं. कितना beautiful color बन के आया है ये. मैं इसको quickly background में apply करूँगी. Just wanted to tell you that मुझे इसका look थोड़ा modern रखना था and that is why मैंने colors थोड़े different choose करे इस बार. And now once my background is done, I'll proceed with the flowers. And flowers के लिए सबसे पहले मैं base पे white acrylic paint add करूँगी and then I'm adding a bit of magenta. To be very frank, is composition का main attraction is the 3D part of it and the colors. मैंने ज़्यादा elements की detailing पे ध्यान नहीं दिया है. So yeah, that is why मैं बार बार इसी चीज़ को repeat करूँगी that this particular art piece is super easy, super simple because इसे paint करना बहुत ही ज़्यादा easy है. Moving on, now I'm mixing white, yellow and turquoise color जिससे कि मैं leaves पे paint कर सकूँ. And look at this, कितना beautiful color निकल के आया है ये. Now I'll quickly apply this color on the leaves. I am in love with this combination guys. Do comment down below आपको कैसा लगा इसका color palette. I am way too excited to complete this art piece and decorate this in my room. And yes, once that is done, मैं quickly इसका lighter version बनाऊंगी white and yellow को add करके and I'll start applying few more detailings on the leaves. And look at this, एक अलग ही जान आ चुकी है इस art piece में थोड़ा सा light and shadow के साथ play करके. And yes, once that is done, मैं सोची background में भी थोड़ा ज़्यादा contrast
इंटरेस्ट डेवलप हो इसके लिए आई एम एडिंग फ्यू मोर लीव्स एंड फॉर दैट मैं बैकग्राउंड कलर का ही डार्कर वर्जन क्रिएट कर रही हूँ एंड आई एम क्विकली गोना पेंट दैट एंड यस गाइज वंस दैट इज डन मैं इस पे फाइनल टच देने के लिए वार्निश अप्लाई कर रही हूँ सो दैट जो भी हमने पेंट किया है वो हमेशा ऐसा ही रहे एंड याप this is what it looks like guys. I am in love with this piece. Also guys do comment down below if you like it. Once that is done मैं इसमें keyhole hanging plate लगाऊंगी so that I can hang it. Okay guys, so this is what our piece looks like and I'm sure आप लोग को ये बहुत easy लगा होगा. Rather I would say जितनी भी मैंने अपनी लाइफ में पेंटिंग्स करी हैं या जितनी भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं उसमें से सबसे easiest ट्यूटोरियल मुझे ये लगा. So yes, comment down below अगर आपको ये tutorial easy लगा and if you're planning to recreate this one, I would love to see your creations. So yeah, thank you so much.